तारीख है 10 अप्रैल 2022। समय हो गया 05:46 PM। ये वीडियो में मैंने बनाई JSR वर्ल्ड्स फोरम के लिए। अभी रिसेंटली मैंने उसका लोगो लॉन्च किया है, एनिमेटेड लोगो है। और बिकॉज मैंने पहले बहुत से मीडिया हाउसेस परचेज किए थे। तो अर्लियर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन JBK वर्ल्ड फोरम बना रहा था, तो उसमें मेरे एक मित्र थे विश्वजीत शर्मा। एक्चुअली क्या था, उनका कोई लेना देना था नहीं उसमें। तो JBK वो जय भोले की बोलते थे, मैंने उसको JBK किया, JBK इंडिया ORG। फिर उनसे बात करी तो उन्होंने फर्स्ट तो डिनाई कर दिया। मैंने विजिटिंग कार्ड उसके प्रिंट कराए, लोगो डिज़ाइन किया, कोलैटरल्स वगैरह बनाए उसके। और शिवरात्रि वाले दिन मैंने उनसे बात करी। उनका जवाब बड़ा भद्दा सा था। मैंने जब उनको विजिटिंग कार्ड दिखाया, मैंने कहा यार एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं हम लोग मिलकर। ही वॉज इन दिल्ली पुलिस। तो उन्होंने मेरे हाथ से विजिटिंग कार्ड रख के बोला कि लेकर के छोड़, रहने दे यार, फ़िल्टर बनाने के काम आएगा, मतलब गांजे का फ़िल्टर के काम आएगा। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने अच्छा कोई बात नहीं, चलते रहे। कुछ एक उनके फ्रेंड्स वगैरह के साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए। और ट्विटर पे मैंने जो है इसके ट्विटर आईडी वगैरह बनाया। तो मेरा एक बहुत पुराना ट्विटर आईडी था 2007 या 2010 के आसपास का, hitesh रे1। उसको रीनेम करके मैंने JBK वर्ल्ड फोरम किया। बाद में मुझे पता लगा कि उसको पीछे बैक डोर से हाईजैक करके और उसके थ्रू जो है ना ड्रग्स का धंधा किया जाने लगा था, जस्ट मुझे फंसाने के लिए। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने फिर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बंद कर दिए। कुछ दिल्ली पुलिस के लोग उसमें शामिल हो गए। मैंने फिर जो है धीरे धीरे जो जब जैसे से मुझे पता लगने लगा, पर JBK वर्ल्ड फोरम में ना एक पूजा पाठ लगी थी, क्योंकि उसके सारे कोलैटरल्स की जो है ना मैंने पूजा पाठ करके ब्रह्मांड विजय के साथ किया था काम। तो इन लोगों ने जो है फिर सोचा कि यार चलो, जो मुझे पता लगा अब इसको मार देते हैं और JBK वर्ल्ड फोरम हम चला लेंगे। और मुझे बहुत पता लगा बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। खुद विश्वजीत शर्मा की हत्या के बाद उसकी हत्या ही हुई थी। और विश्वजीत शर्मा जो है मुझे गांजे के धंधे में फंसाने के चक्कर में था, और आई वॉज इन सर्च। पर मुझे एक दो बार मैंने परचेज किया था गांजा 2-4-5 हज़ार रुपये का, बट फिर मैंने मना कर दिया उसे। मैं कहा यार मेरा इंटरेस्ट नहीं बनता इसमें, ठीक है। और मैंने कभी ना अपने आप को रिवील किया और ना मैंने छुपाया। फिर जब विश्वजीत शर्मा की हत्या हुई, हत्या इन द सेंस कि वो एक जगह एक दिन बताया गया कि वो सोया, चाय पी, अपने घर के पास मार्केट में गया, वहाँ उसने चाय वगैरह पी और उसके बाद फिर वो सोया ही रह गया, उठा ही नहीं। सडनली रात के 3 बजे करीबन मेरे पास उसके एक कज़न का फ़ोन आया है कि विश्वजीत शर्मा नहीं रहा। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल तक गया था, उर्फ लक्की, एलियस लक्की। फिर मैंने जो है, क्योंकि वो नशा भी बहुत करता था, मैं उससे थोड़ा दूर ही रहता था। उसका फ्रेंड सर्कल भी जो है ना क्रिमिनल्स का था। हो सकता है कि वो उस तरह के सर्कल में रहा और पुलिस वाला था। और फिर बात आगे तक गई। नहीं, मेरे साथ तो कुछ नहीं, विश्वजीत शर्मा चला गया, मैंने भी फिर उस सर्कल से जो है हाथ ही जोड़ लिए। फिर भी मैं JBK वर्ल्ड फोरम के मैंने ट्वीट बहुत किए थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट तक किया। बाद में उसमें जो पैसा आ रहा था यूनाइटेड नेशन और बाकी एजेंसीज का, उस पैसे के को लेकर के ना डोनाल्ड ट्रंप और बताते हैं मोदी और इन सब के बीच बड़ी राड़ फंस गई। करोड़ों अरबों रुपया था, पर इंटरनेशनल सोसाइटी ने वो पैसा रिलीज़ करने से मना कर दिया।
उन्होंने साहब का क्या हितेश को पता है कि आप ये सब कर रहे हो? उनके पास कोई जवाब था नहीं। खुद जी न्यूज़ में सुधीर चौधरी जो है दिमाग लगा रहा कि जेबी के वर्ल्ड फोरम आप मेरे साथ बना लो। मैंने मना कर दिया, नहीं यार मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी मैंने साफ कहा इसका ज़मीनी हकीकत नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन की। आई डोंट वांट टू इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ वॉलंटियर, मतलब रोड पे जाना, धरना प्रदर्शन, ये सब नहीं है। सोशल मीडिया पे ही काम चल रहा है। थॉट्स और थिंकिंग एंड आइडियाज़ एंड वीडियोस शेयर करना। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लोगों भी बड़ा बढ़िया बनाया, तो फिर ऑब्जेक्शन लगाने लगे कि इस पे बना हुआ त्रिशूल का डिज़ाइन कहाँ से लेके आया। तो इंटरनेट पे काम करते हैं तो थोड़ा सा डिज़ाइन इधर से लिया, थोड़ा सा इधर से उससे मिला करके बना दिया, और डिज़ाइन भी बड़ा गजब बना हुआ था। मैंने विश्व शर्मा को कहा भी था, मैंने कहा मैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन के दम पे ही लेके जाऊँगा। इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया लोगों को, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। फिर मैंने जो है जेबी के वर्ल्ड फोरम को जो है मैंने क्लोज़ कर दिया। मैं कहा जाओ तुम अपना, मैं करूँगा ही नहीं। उसमें जो है ना करोड़ों अरबों रुपया लगाने को तैयार रहे लोग बाग, और मेरे नाम पे कई कई घर बनाने लग गए, मोदी तक। मैंने मोदी का कैंपेन भी उसमें प्रमोट किया, और मोदी की टीम ऑब्जेक्शन ले करके मतलब मुझे ही मारने पे उतर गए। मैंने मोदी के अंदर जो है बहुत इंटरेस्ट लिया मैंने उसमें, मैंने बहुत रिस्पेक्ट दी उस इंसान को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने यहाँ तक लिखा था एक बार कि आपको मतलब गुरु समान मैंने उनको माना, बहुत मैं पूज्यवर तक कहता था उनको, दादाजी समान मैंने उनको रिस्पेक्ट किया। पर जब मुझे पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो आदमी इस तरह की मेंटालिटी का है, मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने फिर ट्विटर पर लिखा भी था कि तन समर्पित मन समर्पित और आपको क्या दूँ। मैंने यहाँ तक लिखा था कि अगर आप इशारा कर दो ना तो मैं इतना डेडिकेटेड आदमी हूँ कि पूरी धरती जीत के आपके चरणों में रख दूँगा। और मोदी की टीम के लोग जो है वो सडनली मेरे को आइसोलेशन में डालने लग गए, और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत पैसा लग चुका था जो मेरे को अंदाज़ा लगा, और हुआ भी ऐसे ही। अब पता नहीं इसमें क्या शेयरिंग रही नहीं रही। फिर बाद में जो है मतलब उसके लिए मेरे को इतना प्रेशराइज किया जाने लगा कि मोदी तक की टीम ने कह दिया भाई तूने लिखा था ये तुझे कि आपको तन समर्पित मन समर्पित और तुम्हें क्या दूँ, तब इसका कुछ बचता ही नहीं है। तो मैंने भी कहा तो आपने जवाब नहीं दिया ना ट्विटर पे, आपने एक ट्वीट मेरा रिट्वीट तक नहीं किया आज तक, तो फिर क्या बात बोलूँ मैं आपको। बल्कि आपके कैंपेन मैंने प्रमोट करी है, पैसा आप दोगे मुझे, मैं नहीं दूंगा आपको। और बाकी सुपर वॉइस में क्या चलता रहा मैं उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। मैंने तो लिखा था भाई साहब, बीजेपी को सोशल मीडिया पे कवरिंग फायर देना, आर्गुमेंट्स देना, सब चलता रहा। फिर मैंने बाद में जेबी के वर्ल्ड फोरम का ट्विटर हैंडल दोबारा रीनेम कर दिया। उसमें 30-40 हज़ार ट्वीट उसमें भी हो रखे थे, और भी थे मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार ट्वीट के भी थे। 2 ट्विटर हैंडल मेरे चल रहे थे। बाद में मैंने उनको अलग रीनेम किया। फिर काम करते करते मैं काय एजेंसी, वर्ल्ड की सुपर एजेंसी में आया, जो कि भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। और उसके बाद जो है सीक्रेट्स इसी तरह चलते आ रहे हैं। तो मेरे को सडनली जो है ना मोदी से घिन आने लग गई। इसका कारण था इसकी नीतियाँ मेरे को पसंद नहीं थी। इसने एक बार एक ट्वीट कर दिया, मैं इसको एकदम आसानी से इसको जो है रीड करता था, इसकी फ़ोटो एसपीजीज वगैरह सब। इसने एक बार ये बात कह दी, तू और मैं रेल की पटरी की तरह हैं, साथ चलेंगे पर कभी मिलेंगे नहीं। मैंने ऐसा कुछ मन में सोचा नहीं। ठीक है, सबके मन में होता है एज एन ए वॉल्टियर। मैं भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक वॉल्टियर ही समझता हूँ, और अब सबके मन में होती है कि वो लाइफ में आगे बढ़ के एमपी मतलब एमएलए, एमपी और डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सर्विस करे। एंड आई वाज डूइंग अ प्राइवेट सर्विस एंड वाज विलिंग इन टू डू इन गवर्नमेंट ऑफिशियल एज।
वो इसकी टीम ने जो है एक बड़ा अजीबोगरीब शिकंजा कसना शुरू किया और मैंने उसको भांप लिया। जब इन्होंने दिवाली पे पटाखे बैन बैन किए, मैं समझ गया ये हिंदूवादी नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं को मरवा रहा है। क्लियर कट। मैंने फेसबुक पे बहुत बुरी तरीके से अपोज किया था उस दिन पटाखों की उसमें, और उसके बाद फिर नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी भारत में आना, मतलब ऐसे अनाप शनाप तरीके से मैंने, यार मैं तो सपोर्ट करूँगा नहीं। फिर बार बार मेरे पे प्रेशराइज किया जाने लगा, तूने लिखा था तन समर्पित मन समर्पित और तुम्हें क्या दूँ, तेरा कोई हक नहीं बनता, ये है वो है। मैंने कहा ऐसा तुम में से किसी को नहीं लिखा, तो मैंने तुम में से तो नहीं लिखा ना किसी को, मोदी को लिखा है ना, मोदी हैज टू आंसर मी इन रिटर्न। लिखित में दे दो भैया, मैंने लिखित में बोला, नहीं तो जाओ अपने घर। सुपरवाइज छोड़ना यार, सुपरवाइज तो प्रेतवानी होती है, वो छोड़ना, कौन किसकी आवाज़ में मिमिक्री कर दे कौन जानता है। और फिर मेरे बारे में बीजेपी की एक टीम जो है बहुत अनाप शनाप बकने लग गई। मैंने आरएसएस को चैलेंज कर दिया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, हार्दिक भट्ट से एक बार बात करते हुए जेबी के वर्ल्ड फोरम बनाने से पहले, कि मैं एक दिन वर्ल्ड की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा जो आरएसएस से भी बड़ी होगी। तो कुछ आरएसएस के लोगों को बुरा लग गया होगा। अब पता नहीं मेरे नाम से कोई एफआईआर हुई थी या नहीं हुई थी। ऐसे ही सेम एचडीएल में था, हिंदू डिफेंस लीग में, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए अपने आप को बड़ा सुप्रीम समझते थे, जैसे हार्दिक भट्ट, सुरेश सिंह और प्रशांत पटेल। और इधर जो है सुदर्शन शर्मा ने दिल्ली पुलिस की पावर यूज़ करनी शुरू करी, उसको लगता था कि उसके बेटे की हत्या मैंने करवाई है। तो साहब ऐसा मैंने तो नहीं करवाई थी, और मैं ऐसा आदमी भी नहीं हूँ कि अपने दोस्त को मारने के लिए किसी को कहूँगा। और मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि मैं आपको सारी जो है हकीकत बताऊँ, क्योंकि बुरा मत मानना सर, आपके बारे में भी मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और जेबी के वर्ल्ड फोरम सर मैंने आपके लिए नहीं बनाई थी, ना आपके साथ बनाई थी, ना मैंने लक्की के लिए बनाई, ना लक्की के साथ बनाई। तो आपका कोई हक नहीं बनता उसका केस लड़ना सुप्रीम कोर्ट में। पर हाँ ये ज़रूर है, आपने मुझे डिफेम किया है, मैं किसी भी दिन जो है ना 50,000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा आप पे फायर कर दूंगा, ठीक है। फिर दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर डिप्लॉय किए गए, मेरे को उनके बिहेवियर से भी लगता था, मैं अगर इधर से बाहर जा रहा हूँ घर पे, तो इधर बैक साइड से पुलिस वाले आके कॉलोनी के अंदर अनाप शनाप बक रहे, मेरे पे बजर्स लगाना, एसपीजी अटैक्स, ठीक है, कि मैं पुलिस वालों से बात ना करूँ, मैं किसी से बात ना करूँ, मैं कुछ बोलूँ ना, ठीक है। फिर मुझे धमकियाँ दिलवाना इशारों में, मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, मारने तक की कोशिश की गई, मेरे बच्चों को किडनैप करने के लिए खुद स्मृति जुबिन ईरानी और ये क्या नाम है इनका, अनीता तंवर इन्वॉल्व थी, रणवीर तंवर की वाइफ जो है यहीं पे। मतलब मेरे बच्चे स्कूल जाते तो प्रिंसिपल को फ़ोन करके मेरे बड़े बेटे को पिटाई लगवाना, ज़बरदस्ती बदतमीजी करना, स्कूल कॉलेज में स्कूल के अंदर मेरे बेटे का फॉर्म गायब कर दिया एडमिशन का, कहीं जाऊँ तो एक काम के लिए मुझे 4 बार जाना पड़ रहा है। फिर उसके बाद बदतमीजी, फिर कहते कि अच्छा ठीक है ट्विटर पे बहुत लिखता है ना, तो अब जो परेशानी है ट्विटर पे लिख दिया, मेरे घर का पानी बंद करवाना। फिर उसके बाद जब मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी, तो मेरी अपनी एसपीजी सिक्योरिटी है, ठीक है, तो मेरे को एक दिन एक बात समझ में आई। मैं बिहार जाता था तो बिकॉज आई वॉज बीजेपी वॉल्टियर, मैं बहुत मान सम्मान देता था इनको, ठीक है। तो मैंने इनको जो है ना पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के उसमें आईडी में डीएम कर दिया कि भाई मैं बिहार जा रहा हूँ, मामला संभाल लेना। मुझे पता था नीतीश कुमार जो है ना मोदी को बिहार में घुसने नहीं देगा, हाँ ये हकीकत है। और मैंने कुछ ऐसा गेम खेला और मैंने शर्त लगा के जो है मतलब बिहार में जो है नीतीश कुमार का गठबंधन तोड़वा दिया। हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और नीतीश कुमार के हाथ से जो है बिहार की सरकार चली गई, उसकी मजबूरी हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में मोदी के आगे झुकने की। हाँ मैं था वो आदमी सर। फिर बाद में जब मोदी ने मतलब एक अजीबोगरीब खेल खेला ना, तब मेरे को बहुत बुरा लगा। मैंने कहा वैसा आपसे जो बन सके वो कर लेना। और विक्रमशिला एक्सप्रेस में मोदी की एसपीजी टीम है,
ने इल्यूमिनाटीज़ के साथ मिलके मेरे पे हमला करवाया, और खुद बिहार की गवर्नमेंट के भी लोग इन्वॉल्व रहे मेरे साथ, बदतमीजी करना। खुद पीयूष गोयल वॉज इन्वॉल्व। मैं जिस कोच में जा रहा हूँ उस कोच में जो है क्या कहते हैं पानी बंद करवा देना, हॉकर्स की बदतमीजी। और मैंने मंत्र जाप भी, मेरे पूजा पाठ भी बहुत बड़ी थी। शायद इनको अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ मंत्रों में। आज भी मेरे पर कंटिन्यूसली मंत्रों के हमले होते रहते हैं, और यहाँ तक कि मेरे घर परिवार के अंदर से भी कुछ ऐसे अटैक्स हुए जो कि अनबियरेबल रहे। मैंने किसी के भी आगे झुकने से मना कर दिया। मैं जाओ ना, झुकना ही होगा तो मंदिर में जा करके देवी देवता हैं उनके आगे झुक लेंगे, भाई तुम कौन हो। तो मेरा ना इंटरनेशनल पैसा आने लगा ट्वीट्स पे। मेरे ट्वीट्स भी बड़े गजब होते थे। फिर मैंने जेबी के वर्ल्ड फोरम जो है शट डाउन कर दी। सुदर्शन शर्मा ने जो है कुछ पुलिस वालों के साथ मिलके जो है मुझे मारने की भी कोशिश करी, और होली वाले दिन कुछ पुलिस वालों से कह करके बाकायदा मेरे मेरी बाइक वगैरह का चालान करवा दिया। भले मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, पर मैंने सेंट्रल विजिलेंस का ओथ सर्टिफिकेट दिखाया, क्योंकि होली थी, जेब में कौन डॉक्यूमेंट रखता है इतने। और मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस ही जा रहा था। तो सुदर्शन शर्मा वॉज इन वॉट मूड आई डोंट नो, बट ही वॉज इन्वॉल्व दैट डे। और भी कई लोग इन्वॉल्व थे। इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है। डिपार्टमेंट और पुलिस सिर्फ आपकी बकौती नहीं है ना सर। फिर इंटरनेशनल लेवल पे मेरे ट्वीट्स जाने लग गए, यूनाइटेड नेशन से लेके आईसीजे, इंटरपोल, और इसी तरह से काम चलता रहा। फिर मैंने अपने पैसे से जो है ना गेम खेला, और उस गेम को बढ़ाते बढ़ाते जो है मैंने सडनली एक दिन कहा, मैंने यार JSR सिक्योरिटीज़ बनाते हैं। और मैंने JSR सिक्योरिटीज़ बनाई, क्योंकि मैं पैसा ना बहुत कमा चुका था सुपरवाइज में। वो पैसा जो है ना तो मोदी का था, ना डोनाल्ड ट्रंप का, ना किसी का भी। क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जो भी बनाई मैंने, मेरी खुद पूजा पाठ मेरी ब्रह्मांड विजय और त्रिलोक्य विजय प्रसिद्ध है। इन्होंने मेरे पे बहुत हमले किए, तो मैंने जो है इसको एकदम क्वार्टाई नहीं कर दिया, मैंने दफा हो यहाँ से। और उसके बाद जो है ट्रेन में जो है एक दिन मैं लेटा हुआ था, मैं जा रहा था बिहार। उसी समय की बात है जब मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में DM भेजा था, डायरेक्ट मैसेज कि बिहार जा रहा हूँ। मुझे पता था कि नीतीश कुमार ज़रूर ड्रामेबाजी करेगा, क्योंकि मेरे ट्वीट्स जो है, वी वर दैट टाइम भारतीय जनता पार्टी इज़ वॉलंटियर एंड दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक मिस्टर मोदीज वॉइस इनसाइड द बिहार, बिकॉज नीतीश कुमार्स mentality and Bihari's mentality is they will not allow to enter Mr. Modi and not allow Bharatiya Janata Party to let campaign inside the Bihar. तो I took the initiative। इस बात से शायद कुछ लोग नाराज़ भी थे, रहे मुझे क्या मतलब है, बट डरता तो मैं किसी से हूँ नहीं भैया। हाँ, वो एक अलग बात है, 25-50 लोग हमला कर देंगे, मैं तब भी पीछे नहीं हटने वाला, ठीक है ना। और शुरू से जो है मैं ब्लंट ही रहा हूँ एकदम। तो उस दिन जो है कुछ इल्यूमिनाटीज जो है वहाँ पे कुछ एक्ट कर रहे थे मेरे साथ, वो आई वॉज इन ट्रेन। मैं समझ तो गया था। फिर मैंने गेम को समझना शुरू किया। फिर मेरे को लगा, मैंने मुझे मारने को तो कोई भी मार सकता है, एक गोली का खेल है, मैं जिंदा क्यों। फिर पता करते 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 मुझे पता लगा कि मामला है क्या। मगर ठीक है, फिर मैंने कहा छोड़ो, ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। स्मृति जुबिन ईरानी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी was in a fight with me to compare herself with me. While I was never in mood to compare myself with her, because I never loved to be take her in my comparison, and if there is no comparison as enough, because I'm just a volunteer and they were ministers. I always love to say respect to her. बट मुझे सडनली पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कुछ नेता मिलकर जो है बिहार भागलपुर में मुझे परेशान कर रहे हैं। तो मेरी एक आदत थी कि मैं ध्यान लगाने के बाद किसी को भी देख सकता था कौन क्या कर रहा है। शायद ये लोग ये बात जानते नहीं थे। तो मुझे पता लगा कि मैंने कहा यार पता तो करूँ। तो मैंने एक बात वहाँ कह दी
कुछ पंक्तियों में कि कौन है जिसने मुझे हराया, फटाक से नाम निकल के आ गया कि वो है स्मृति जुबिन ईरानी। वो दिमाग लगा रही थी, बिकॉज हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं या होम मिनिस्टर। फिर उसके बाद मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। मैंने साफ लिख दिया कि आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेटर अब नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी में काम, आप अपने आप संभालो। साफ सीधी सी बात है। इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती ना सर। वो भी हो जाए चलो ठीक है, एक साधारण वॉलंटियर के तौर पर आप सर मेरे घर परिवार को इंसल्ट नहीं कर सकते ना। स्मृति जुबिन ईरानी वॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व in harassing my family, and the same was done by Priyanka Gandhi, because she ordered to kill me and provided a 5 lakh rupees to someone to attack on me just to check my security. It is not allowed. And the same, so many other ones was thinking that this boy is very good or this person is very good. Why should not we grab him as an opportunity? He is not having much money in his pocket. So we will give him greed and some arrangement of money, and we will ask him to be in our favor. नहीं, ऐसा नहीं होता सर. I am fixed to my ideology, and my ideology was since the beginning is in search of complete Sanatan Dharma party, who's always in support to Hindus and against the cow slaughter. But as here in India, Amit Shah's policies and RSS Muslim wing is not bearable for me, and I was never allowed to work against my ideology. Same was I visited to NCP also, but it's never a mean that a person is visited as a volunteer in NCP or in Bharatiya Janata Party is going to be your asset or your property. First of all, I'm a citizen of my nation, and my responsibility is to save my nation. If ever I see or if ever I found that those political parties are not in favor of my nation, as the Mr. Modi did in GST and in COP24 and in your demonetization and in other acts. Mr. Modi always loved to be show that he is a very big person. He was never loved to be meet volunteers who is working hard for them. So every volunteer thinks they are working very hard, whether they are working or not. But see, this is responsibility of the seniors to meet everyone, because volunteer create party never create volunteers. Simply, yes, it's very simple, because of volunteers. But I never said that I created Mr. Modi. Mr. Modi was there on chair because of his effort, not by me. Because I came in picture after when he selected as a prime ministerial candidate from Bharatiya Janata Party, and after the Gujarat riot, because the in first scenario's picture was he is against the Muslim. But as he came to know in picture that he is a Jewish and he is really a Jewish terrorist, and he is working on behalf of Israeli, and he is committed to attack on Indian army, his team, and he is having a IS roadside bombing code. He was involved in attack in a village in Africa called Mali. Yes. So this is an investigation. So that's why I keep myself very much away from him. And after long time, suddenly, because I love to always read my granthas and Qurans for my religious practice, and I was in continuous in that. So suddenly, once I received a message that Mr. Modi. Someone threatened Mr. Modi from Pakistan. I said, who? Because I was in mood to keep myself away from Bharatiya Janata Party's activity, and not in I was personally not in favor to be work for Mr. Modi and Bharatiya Janata Party. So because on Twitter I saw that Mr. Modi and Mr. Shah was in mood to just unfollow everyone, and the only 2% will be going to follow by Bharatiya Janata Party.
and the whole party will be dominated by Amit Shah and Narendra Modi. It is not acceptable as an intelligent member of party. So it is objectionable. Yes, you can't deny other asset of the party, no? Okay, no problem. So because you are, if you switch, if you're thinking so, you are that much powerful. So go and enjoy your party and enjoy your post. And then suddenly that I was on Twitter and I was browsing. I received a message of someone from the Pakistan is threatened Mr. Modi. No? I said, who is she? A lady is it? And I saw a picture of Rabi Pirzada. And I quoted her and I start talking to her. And so many times I love to to irritate Pakistanis from here, India. So it was just a thing that I was in as an simple in Indian, and I was irritating them. That's it. Nothing else. But I was not known that what is my responsibility and who I am. I was not never aware. And no one told me that. As a common citizen of India, as a normal human being, I was tooting. The same I did, and as I know that a lady, Ravi Pirzada, she weared a suicide bomber jacket and threatened Mr. Modi, and I tweeted, Padani blah blah XYZ, and I was in picture with Mr. Imran Khan. Not saying that in my mind, I just messaged a quote very, not a very irritating kind of. ना इरिटेट द वेरी यार लड़की दिखा रहा थोड़ा ढंग से कपड़े में दिखा दो तो उसके बाद से जो है सडनली द चेंज एवरी चीज एंड एवरीथिंग वाज चेंजिंग या कुछ आई नोटिस that lady is talking to me in a super voice without any device. I was talking to her and I was receiving a message. I know that the research and analyzing and they start their server and they are preparing me to hear voice without any device, something kind of this thing. So suddenly I came to know that they all are just to kill me or just to prepare me. They allow all Guru ashrams and all departments and agencies to fire their special powers on me. And it is really very hard for me to accept it as a human being and each and everything. Yeah, everyone, whomsoever is a senior and on a higher post knows what I am saying right now. So it was very hard to understand and I was bearing each and everything. Suddenly the SPG attacks also, no one is allowing me to be that side. That some forces is asking me to stop, not to go there, not to talk with them, not to act like that. As I visited to civil defense office, suddenly I came to know that there is a SPG attack on me. It was a ban for me. I don't know why it is so. Then suddenly I came to know that Smriti Jubin Irani has announced me as a Central Intelligence Agency CIA's agent, just to keep me away from the Bharatiya Janata Party. इतनी सी बात है. अगर आपको मेरे से इतना डर लगने लग गया CIA agent, then I recently just 5 or 7 days back I saw Mr. Modi and his team by defamation case for announcing me anti-national and a CIA agent with the penalty of 50 lakh crore rupees, and I won the case in first hearing, and they said very soon we will execute whatever is outcome here. And with the help of ICJ, I would like to ask to ICJ and Interpol that please allow me to honor you, sir. I am very much thankful to both organization and NYPD, also New York Police Department and United States of America Army, that and CACI also. They are here to save me and my family.
and as well Mossad, as well as I don't know whether the Israel is going to happy with to hear this or not, but yes, Mossad is very much here to save me, and I would like to respect them very much. And Mossad is preparing my personal living being things and each and everything, and the same is by United States of America's army. Then I start creating JSR security. I don't know who is and who is behind and who is creating this, but definitely they're not the Bharatiya Janata Party nor Indian Army. Because sometime I saw that Bharatiya Janata Party and Indian Army is taking interest in my personal life also. They are provoking my in-laws, my son, my wife, my brother, and just as in the same Hinduvadi volunteer's wife did to him, Vishnu Gupta. That I came to know that this is the style of Mr. Modi. If anyone, any boy or any married person will came in picture in Bharatiya Janata Party, they'll send their female volunteers and start calling them their wife and ask them to receive money in her parental side, and keep harassing your husband and try to assault him with the case of domestic violence. It is a proven one. Yes, Vishnu Gupta was framed by Bharatiya Janata Party's Mr. Modi and Smriti Jubin Irani. It is. Vishnu Gupta doesn't know because he was very much highlighted, and he was not in favor of Orange Brigade, a complete Hinduvadi brigade. And I asked Delhi police to take both husband and wife personally and ask them to sit together and be together. I would like to ask you also that don't to Vishnu Gupta and to our wife also. It was a game, and it was a very easy game by the Bharatiya Janata Party and Mr. Modi ki take husband other side and take wife other side, and use her wife as an asset. ये यहाँ नहीं होने वाला ना सर, यहाँ नहीं होता ना, यहाँ तो आई एम नॉट अ दैट ब्रिगेड. So this is the thing, and the same as I came to know that the JBK World Forum name was using by Donald Trump, Mr. Modi, and other agencies also, and I directly involved ICJ in that. Kindly investigate the matter whether the JBK World Forum exists or not. If someone is in entire world, say with the help of Interpol, if someone is in entire world using the JBK World Forum name and collecting the money and sabotaging my name, first of all. Second, if JBK World Forum belongs to me, then who are you to collecting the money on behalf of me without asking me and providing me my share? That's it. It's a completely clear thing. But the Mr. Modi thinks okay, that anytime he can be able to execute me or to ask anyone to kill me. It is not easy, Mr. Modi. This is a democracy. It's a India. Don't think so. Now then because my mood was to introduce JBK World Forum as a world media house. That anyone can speak on a JBK World Forum, but there is no right to kill anyone. No one has a right to harm physically to anyone. Even you can abuse. You can put any argument in front of camera. No problem. Whatever. But you don't have a right to harm physically to anyone or to assign any team to kill your opponent who is in debate with you. So the same is in case of Ravi Pizza. I was continuously keep in touch with the. Suddenly I came to know that she is in touch with me with her mind. She is thinking about me. I noticed so many times her tweets that I think because I am intelligent that much, I know I can easily understand that she is trying to talk to me in messages. She is wearing as I like.
Because as I tweet, she start acting without telling to anyone. I don't know whether it's right or wrong. मैं कहा छोड़ना यार, तू लिखता जा जो लिखता जा रहा है, करता जा जो करता जा रहा है। अब उसके बाद इन्होंने शुरू किया कि मैंने एक बार बोला कि मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, ज़िंदगी में कुछ करते रहो, बन अपने आप जाओगे। तो अब ये कह रहे कि मोदी जी ने कहा था इसलिए तू ऐसे। तो यार क्या बात कर रहे हो? तो प्रधानमंत्री क्यों बनाया उसे? अब पीछे पड़ गए, तूने उसको गुरु बोला तो क्या पाप कर दिया क्या? गुरु बोला तेरी गुलामी करूं क्या? तो दिस इज द थिंग। सो वे जाते हैं यहाँ से। ऐसे तो यहाँ तो हम स्कूल में गुरु किसे ही बोल देते थे। हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। हम लोगों ने बड़ी कॉमन लाइफ जीवी है, हमें कोई लेना देना नहीं इन फालतू की बातों से। ऐसे हजारों लाखों ट्वीट आते हैं, सबके जवाब दे के दिखाते तुम मेरे को। तो वाई मी? बिकॉज आई वॉज द इंटेलिजेंट मोस्ट and they were asking me to work free because Smriti Jivin Irani was in mood to stop my path of success। ऐसे दफा हो ना यहाँ से। कौन है तू और क्या है तू? फिर इन्होंने कहा यार तेरी वीडियो सही नहीं बनने देंगे, दे स्टार्ट इंस्टॉलिंग सम डब्बाज हियर। आई डोंट नो व्हाट इज डब्बाज। कहते हैं इन लोगों का ना मुंह टेढ़े होते हैं। देख लो मेरी वीडियो में चेहरा इधर से जो है, ये लोग तैयार करते हैं यहाँ आसपास, किराएदार ला के रखेंगे। वीडियो में फिल्टर है, वैसे है नहीं चेहरा ऐसा, फिल्टर लगा के चेहरा ख़राब करेंगे कि देखते हैं इसकी वीडियो जो है बढ़िया कैसे बनती है। जैसे मकान है ना, जैसा मैं साउंड करता हूँ, देखो है ना क्लास, यहाँ ऊपर एक औरत रहती है, उसका मुंह ऐसा टेढ़ा है पूरा, आप देखोगे ना एकदम ऐसे करके। तो वो जब कैमरे में पता नहीं कैसे फिल्टर लगा के ना कैमरा हैक करेंगे और मंत्र पढ़ते रहेंगे, हो जाएगा। फिर एक औरत एक मर्द, ये करते हैं, ये होता है ये। फिर बात आई वहाँ से पाकिस्तान के मामले में ट्वीट करने की। तो ना स्टार्ट, मैं थोड़ी, but yes, my tweet was very much attentionable than anyone else. I know how to tweet, how to tag agencies, how to talk and how to question to agencies with involving their Twitter handles perfectly, and how to read the messages in photograph, and how to read the messages was hidden in words. So I keep continuously, I was working and I came to know that my agencies informed me that you were selected as an so and so post. Suddenly I came to know that Mr. Modi was in mood to, because he was under investigation of Rafale jet deal. Anytime he has to resign, and include even because of demonetization, India loses trust in entire world, and no one is in mood to trust on Mr. Modi also. So, and the Indian government is they completely lose the trust of in matter of economics and in matter of currency also. And it was a downfall of Mr. Modi. Yes. So now the India is in a big trouble now. So the Mr. Modi that day asked me, while Rabi Pizza tweeted, someone tweeted, or Rabi Pizza tweeted a photo and she threatened to Mr. Modi. Someone says me that it was a directly threat to Mr. Modi, if ever you try to touch Hitesh, I will destroy you. Or it was just a code of gesture to show me, like I asked as a VVIP security concern, someone asked in my supervisor in a hotline, and they asked me, increase the security of so and so officials and tweet us, and I tweeted, and it was not that I was a slave to Bharatiya Janata Party, sir. I'm not slave to you. I'm not a first and last Prime Minister here in India. So many other came and go. You are not permanent, you are not forever.
Now I was not interested into work on Instagram. Then I came on Instagram. As I left BJP, I started living my life in my style, and bluntly I was using Twitter and quoting to so many other photographs. Start quoting other women and girls and other friends, and I start replying and countering them in their tweet and their messages also. And it was really a wonderful experience for me, and it's continuously on. Then I came on a video also, and I received a message from Ravi P. Zada, and she said, यार कि तू लिखता ही रहता है यार, तुझे हिलते हुए देखना है यार. अच्छा. Then I start creating videos. No, with no other voice. It was because of Ravi P. Zada, Twitter handle. She asked me. Don't ask me that why and how and when. But yes, it's true. Achha, I will try. And I created through 2 or 3 videos, and someone deleted those videos in my YouTube, logged in by. I saw that Mr. Modi and other Bharatiya Janata Party's volunteer was not happy like Sambit Patra, and other ones like Gaurav Bhatia, and other ones like he is that much intelligent, can talk to Mr. Imran Khan directly like this. No, he is against our Ministry of External Affairs policy, ye, wo, blah, blah, XYZ. Hey, are you stupid? So many thousands and thousands of persons are creating video, but Mr. Khan was in Pakistan, knows about me or not, I don't know. But someone told me that yes, he always keep his eye on you. Why? I don't know. But someday I was watching my thumb. ऐसे बैठा और मैं देख रहे हैं क्या ऐसे करके कुछ सडनली मेरे को लगा यार कोई डिज़ाइन सा बना हुआ है. ऑनेस्टली मेरे को लगा कि यार ये माइक्रोस्कोप है. मैं देखता रहा फिर मैं ऐसे देख ही रहा था. मेरे बेटे ने मुझे बोला, पापा आपके अंगूठे पे क्या है, ये क्या देख रहे हो? मैं कुछ नहीं यार यही देख रहा हूँ. फिर मैं एकदम ध्यान से गया, मैंने तो हिंदी का अक्षर है. और ये बात सिर्फ 2 या 3 साल पुरानी है. अब उसके बाद क्या हुआ कि I was continuously was working on Twitter, and suddenly after a few days I came to know that the Ravi P. Zada's personal video was viral on YouTube and in Pakistan. I was aware that so many my followers was there and they can reply to them, and I asked them to directly, until unless each and every video will be deleted from Google and YouTube, you will not stop. You will kill each and every one. Because it was in my mind because of my reply and asking my question to Ravi P. Zada and to Pakistan government that लड़की दिखा रहे तो ढंग के कपड़े में दिखा दो. So it was a kind of thing that someone forced, and someone was in mood to sabotage her personality. That's it. Then someone told me that it was done by Mr. Khan. Now I'm telling you, that's why Mr. Khan's government is definitely going to be sabotaging Pakistan. And I'm very much committed for this. Until unless government of Pakistan will directly ask sorry to me and sorry to Ravi P. Zada openly, we will not let Pakistan live. I know, sir, Mr. Khan, you are behind it. You ask your Pakistani Prime Minister office, yes, to copy her personal video from her Apple iPhone, and you published it in media on command of Mr. Narendra Modi and Smriti Jubin Irani to insult me that this is your Ravi P. Zada is changing clothes. No problem. You have to pay very heavy price, Mr. Pakistan, Mr. Khan.
Real secret operation always remains secret, sir. And keep yourself away from it, Mr. Manim Nawaz Sharif and other also. Mr. Bajwa, ask your government and ask your army, be prepare yourself. We will not let you live. And we will not spare Mr. Modi also. I will use my mind's full capacity. Because it's a very common practice by the politician and by the celebrities. Once someone is highlighting and is rising, that use a very simple thing to just sabotage his personality by saying that he is in fight. The same was done by Mr. Mukesh also. He is abusive, he was not earning, he was not in job, and he is using Twitter. Every time he loved to be on media, he has to work bread and butter for his family and start let him in fight in society and insult him in front of society and start the same is using by the Amitabh Bachchan for me also right now. Go and spread a few bucks to the society around him and ask them that his family is like this, he is not wearing good clothes, his house is not good, इसके घर में ये बल्ब नहीं है, इसके घर में ये बत्ती नहीं है, ये पैसा कितने कमाता है, इसकी बात ये नहीं है, देखो जूते कैसे पहने हैं इसने. तो this kind of cheap things is a practice of these big and big, इतने बड़े big. मेरा हाथ है, मेरा हाथ है. Now, what you would like to say, Mr. Khan? Now, who is having a big office and a small person inside the office? You have to answer, Mr. Khan. If I'm saying Mr. Khan, it's Mr. Imran Khan. I asked my thousands and thousands of stabbers inside the Pakistan. We will not let live anyone. We will stab you or say sorry to us and pay, yes, 50,000 crores to Ravi Pizza cash in an account, international account, not in Pakistan government's any bank. Yes, you were behind. And the same is done by the Mr. Modi just to insult me. Now I'm telling you in Hindi. काट के फेंक देंगे सर पूरा पाकिस्तान. हितेश नाम है मेरा, याद रख लेना. मैंने लिखा था, वो मर गई तो पाकिस्तान की मर गई. उसको मारने का ऑर्डर सर आपने दिए थे और मोदी. Then suddenly we came to know that Pakistan Energy was and Indian Energy was create a joint force to hunt down Ravi Pizda because Mr. Khan was want her to be in a bed. The same was today that Pakistan Supreme Court's or honorable, your honorable for you, speaker was using the same word in case of Ravi Pizda. You know what Mr. Putin said to you? बाप बना के उड़ा देंगे पाकिस्तान, सीरिया बना देंगे सीरिया. दिमाग मत लगाना मिस्टर खान, ये है असलियत. दिस इज JSR वर्ल्ड्स फोरम. इसीलिए बनाई सर मैंने. कौन JB के वर्ल्ड फोरम? जहाँ ना लक्की गया बात खत्म. समझ में आई? और JB के वर्ल्ड फोरम के नाम पे पैसा लेना और देना कानूनी अपराध है, क्योंकि विश्वेश शर्मा नहीं रहा और मैं ये ऑर्गेनाइजेशन ना चलाऊंगा ना चलाने दूंगा किसी को. मैंने बनाई थी सर.
और इसमें कभी भी कहीं पे भी किसी के लिए भी नॉमिनी के लिए कोई जगह नहीं है. I created JBK World Forum and I will not allow to anyone take and give money in name of JBK World Forum. Because Mr. Vishwi Sharma is no more. He is not in this world. And none of other I will allow to take money on his behalf. Not his wife, not his son, nor his daughter. Even not his father and mother. And I'm not in mood to run JBK World Forum. If anyone do so, it's an illegal practice and we will love to. Yes. Punished with the international law. If anyone I ever found to insult me and my friends, I will ask you 50 lakh crore rupees penalty. If ever I found anyone who will logged in my logins or ever try to delete those videos, we will punish you with a 50 lakh crore rupees. It's a responsibility of Indian cyber crime police to stop this. So that's why I was in mood to create another organization as a World's Forum. And I created JSR World's Forum. As I created JSR Securities, world's biggest army, fully weaponized, open capable to fight nuclear war. It's neither or nor property of Indian Army. So this whole story was understanding. If anyone thinks that Ravi Pizada is a citizen of Pakistan, I will not let Pakistan live, sir. More than 80 lakh stabbers, mass stabbers inside the Pakistan. They will stab you. Until unless government of Pakistan will pay 50,000 crore rupees to Ravi Pizada. Welcome to JSR World's Forum. Thank you very much.